ওকে, সো আমার ফার্স্ট কথা অফ অল ঠিকঠাক যাচ্ছে কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার কথা আসছে ঠিক করে। সো সি फर्स्ट here तो कर दिया है ना, फर्स्ट रहने दो, मत कराना। here your V is Mn over R. Okay, so V is Mn over R. Now for the first question, they just want to know this is a vector space or not. Sorry, this is a inner product or not. So to see this is a inner product or not, we have just to show all the four properties. And what are the properties? This is the first property. This is true for all x belongs to the vector space. The next property is xx is equals to 0 if and only if x is equals to 0. What is the third property? xy x, is equals x to, equals this is y true is for all xy belongs to V. What is the fourth property? x plus y comma z equals to. So basically inner product is linear with respect to the first component, right? Okay. So these are the four properties. If this satisfy these four properties, then I will say this is a inner product, right? So first thing you have to observe, we already proved it, and to show this is greater than equals to 0, I gave you two methods, right? Can you recall it? I told you this is a symmetric matrix, right? And by the help of quadratic form, okay, I already showed you this matrix is positive definite. So that's why you can say this is greater than equals to 0. So the first part we have already done. So इसलिए मैं first part को छोड़ रहा हूँ. Now I am doing the second part. Okay. So सोना तुमने second part कर लिया? नहीं, फर्स्ट हुआ है, फर्स्ट कर लिया कंप्लीट। ओके, सो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे तुम्हारा जो सेट है, ओके, बेसिकली ऑब्जर्व इट, व्हाट इज योर सेट? This is your set, right? So this is symmetric. So now I am asking, is it a vector space? Yeah, tell me. Just think about it. Is it a vector space or not? Let me search some question. I'll give you. हेलो, आवाज नहीं आ रही। Yeah, I am asking, is it a vector space? This is a vector space, right? यस यस। Okay. So does there exist some theorem like this? Is it equals to this? Tell me. If S is a vector space, tell me. No, right? There exists a theorem which tells us this.
this pair and this pair both are same. Okay, but we don't know what is the pair of this element, I mean this set. So now we are interested on W pair. So what is W pair? Those B belongs to Mn over R such that, yeah, tell me, A, B, the inner product will be 0 for all A belongs to this, right? Huh? So basically they wants to say this set will be the set of all skew symmetric matrices, right? Hmm? Tell me. So first of all, I am showing you, let A transpose is equals to A and B transpose is equals to minus B. Okay. Now I am showing, I, I am checking what is the inner product of these two elements. Tell me. So basically this is trace of A transpose B, right? So what is A transpose? A transpose is basically A, right? Because A is symmetric. And you know trace of AB is equals to trace of BA. Hmm? We already know it now. Trace of AB is equals to trace of BA. So can I write B is equals to minus B transpose? Can I write it? Okay. Mm. Now, can I write this thing again? Huh? So observe one thing. Observe one thing. This is the inner product of minus B and A. And I can do this because we already know this is an inner product. So, okay. Now I want to say this is equals to minus AB. Can I say it? Because all things are real. This is real, right? Because AB belongs to, where AB belongs to? AB, A and B both are real matrices, right? So when I will take the trace, then this is also real, right? So we have no need to write bar here. Okay. So if I am writing, then I can do this. So basically we have 2AB is equals to 0 and it will imply AB is equals to 0. Fine. And this is true for all symmetric matrices and for all skew symmetric matrices. Okay, tell me. कैरेक्टरिस्टिक एफ भी मैटर करेगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक का कोई सीन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे फील्ड तुम्हारा आर है. हाँ हाँ ठीक है. सो यहाँ से कुछ प्रूफ हुआ क्या?
कुछ अभी तक कुछ प्रूफ हुआ यहाँ से? So if I am taking one more thing, I am taking, I'm giving you another name of the set. I'm saying, let me write some new name. Give me some name, na? Good name. Let me write here V. Okay. So V is equals to A belongs to Mn over R, such that B A transpose is equals to minus A. Okay. So one thing you can observe. So I have, if B belongs to V, then A B is equals to 0, and this is true for all A belongs to W. Okay. So V is a subset of, V is a subset of W par, right? Fine. So first of all, it will imply B belongs to W par, right? So that's why I am saying I am taking an element from V, and basically it is belongs to W part. So basically V is subset of W part. Now I want to see W par, is it a subset of V? So first of all, note that what is the meaning of trace? If I am writing A inner product of AB, basically this is trace of A transpose into B. So just observe one thing. A11, A12, A13. I'm doing this for 3 elements. I mean 3 cross 3. If a matrix is of order 3 cross 3, I'm doing this for these two matrices. Okay. So the transpose B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, and B33. So basically, this will be A11, A12, A13, A21, A22, A23. Okay. B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. Okay. So I am writing only the diagonal elements because I want only the trace. So what is the trace? Just observe the diagonal elements. This into this. So what will be this element? A11, B11, A21, B21, A31, B31. Can you observe it? I am not interested about the second and third component. Now tell me about the 2 position element. So basically this will be the 2 position element. So A12, B12, A22, B22, A32, B32, right? I am not interested about the last position element. Okay.
Now I am writing the last position element. Okay, what is the last position element? I mean, yeah, basically this is this into this. So A13, B13, A23, B23, A33, and B33. Okay. So what is the trace? Trace of A transpose B. Can you observe it? Basically, this is, so in generally I can write this Aij, Bij, right? Hmm? Can you observe it? Hmm? So now my target is, what is my target? I have to show that W par is subset of V, right? This is my target now. Hmm? I already proved this. Now I have to show W par is subset of V. So if I am saying let A belongs to W par, it will imply A, this is equals to 0 for all S belongs to W, right? Okay, so if I am saying if S is equals to E, where S is a symmetric, so that is I am saying S transpose is equals to S, right? Yeah, tell me. Now, I am interested for this element. So if I am saying S is equals to this element, so what is E LK? Is a matrix whose LKth element is 1 and all the other elements are 0, other entries. Okay, are 0. Okay, fine. Yeah, tell me. So observe one thing. So if I am saying this is suppose ijth element, suppose I am saying this is 1. So in the jith element, this is also 1 and all the other entities are 0. So this AC is also symmetric, right? So if I do this, so basically this will be A Eij plus A EGI. So basically I am saying this inner product is linear with respect to the second component also, right? This is happening. Why this is happening? Because all the entries are real, so there is no meaning of bar. Okay, so what is this? Is it equals to aij only? Because of this, huh? Because all the, I mean, in the ij entry is only one, right? And all the other entries is 0. So when I will put Bij, then Bijth element Bij is 1. Otherwise, all these Bij's is 0, right?
So similarly, I will get this thing. So since I know this is equals to 0, basically this is equals to 0, right? So I have Aij is equals to minus Aji, and this is true for all ij goes from 1 to n. Yeah, tell me, is it true or false? रूपा समझ में आया? Hmm. So, and what is Aij? Aij is an entry in A. So from here I can say A transpose is basically minus A. So what we have, I just take a element from W part and I show it is what is it? A is skew symmetric. So W bar is subset of V. So if I combine these two things, then I will get V is equals to W bar. Okay, done. समझ में आया ना? ये क्वेश्चन अच्छा लगा? हाँ. So recall what is orthogonal vectors, Loka? A part. Let V comma W belongs to let V comma W belongs to V, then V is called orthogonal if V dot Then, W equals to 0. then, Then V is called orthogonal called orthogonal. Orthogonal to W. Yeah. Dot product of VW equals to So here, what is the meaning of dot product? Because we are working on a vector V space. dot V dot. No. Because we are working on a vector space. So what is the meaning of dot product? इन जनरली अगर मैं तुम्हें कोई भी दो वेक्टर स्पेस दे दूं, क्या उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तुम कर सकते हो? नहीं मतलब स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट V dot W तुम्हारा आवाज कल बहुत खराब आ रहा है. हाँ क्योंकि ऐसे फोन का नेट मैं सुन कनेक्ट ही नहीं हुआ पा था रहा हूँ तो कैसे करूँगा? जा रही है. So if the inner product of V comma W is equals to 0. Okay. So since I am talking about the inner product, so this vector space is basically a IPS. I mean, this is the inner product space. Okay. Now, recall this kind of theorems. S part, this will be a subspace of V if S is a subset of V. Second thing, if S1 is subset of S2, it will imply S2 par is subspace of S1 par. उल्टा हो जाता है, ठीक है? Third, already I told you, S par is equals to LS par. Fourth, if W1, W2
are two subspaces of V, then W1 plus W2 its par is equals to W1 par intersection W2 par. इधर बहुत बारिश लाइटनिंग हो रहा है. Okay, so now W1 intersection W2 par, इसके बारे में कुछ बोल सकते हो? Similarly, it will be this. Okay, so I already proved these theorems. So just I want to recall this kind of theorems. Now, Cauchy-Schwarz inequality. Cauchy-Schwarz inequality. तो क्या सोना तुम बता सकते हो व्हाट इज Cauchy-Schwarz inequality? Mode of inner product of x comma y less than equal to norm of x and norm of y. Yeah. And do you know what is the meaning of norm? When I am putting norm, so what is the meaning of norm? Basically, this is root over of this. Okay, and this. This is called the norm, and this is true for all V1, V2 belongs to V. And when the inequality will convert into equality, क्या कह रहे हो? ऐसे बोल रहे हैं equality आप जब hold करेगा. डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के डिपेंडेंट हो. So the proof is your exercise. Now I am giving you a question. So इस टाइप का क्वेश्चन TIFR में आता है ना लोपा? हाँ, कुछ ऐसा दे देता है जिसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, राइट? क्या? इस टाइप का क्वेश्चन देता है ना TIFR में, दिखने में लगता है कि हाँ ये तो बहुत आसान सा मतलब दे दिया गया है. एक्चुअली ये आसान भी है. नाउ टेल मी.
क्या लग रहा है तुम लोग को, क्या लग रहा है पहले वो बताओ। सुनो, क्या होगा? एक मिनट। दोनों ही ठीक है। सेकंड वाला ठीक लग रहा है। फर्स्ट वाला ठीक नहीं है। फर्स्ट वाला भी ठीक है। क्यों फर्स्ट वाला ठीक क्यों है? नहीं 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 ठीक। अच्छा, सेकेंड वाला क्यों ठीक है? So you already know this is a inner product, right? हाँ, ये तो पता है ना? बताओ। You already know this is an inner product. Yeah, tell me. Now अभी देखो, so I can say this thing ना, by Cauchy-Schwarz inequality. Okay, so basically this is trace of b theta a, and this is less than, what is this? This is trace of a theta a, right? And this is trace of b theta b, and I just need to take the root. Yeah, tell me, because this is the root of the mod of the inner product. Okay, that's why second option is true. And why the first option is true? Because I can use EM GM. हाँ अभी मेरे दिमाग में आई ये वाली बात। लोग समझ में आया? क्वेश्चन कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से था, तो ये इनइक्वालिटी हम लोगों को याद रखना। लोग ये इनइक्वालिटी हम लोगों को क्या करना है, याद रखना। बताओ, ये इनइक्वालिटी क्या करना है, याद रखना। नहीं है, क्या है? सो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका बहुत एप्लीकेशंस होता है। orthogonal set of vectors, a collection v1 to vn in IPSV is called
orthogonal if vi vj is equals to 0 for all I not equals to j। तो मतलब मैं इस कलेक्शन को क्या बोलूंगा, ऑर्थोगोनल सेटअप बोलू, ऑर्थोगोनल सेटअप वेक्टर्स बोलूंगा अगर कोई एक और एक के साथ इनर प्रोडक्ट करके 0 देता है तो। ठीक है, ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स, ये क्या होता है, टेल मी। A collection this is called an orthonormal set of vectors if first inner product will be 1 and the second thing sorry, if the norm is 1 and the second thing is inner product is 0, I mean first of all this set is a orthogonal set of vectors and norm of every vectors is equals to 1। what is the meaning of norm of a vector लोगा, नॉर्म का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, जैसे कि इनर प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग आता है हमारा वो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, पहले हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते थे ना, तो उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करके वेक्टर स्पेस में लेके आए हैं हम लोग और उसका नाम दिए है इनर प्रोडक्ट। और जो नॉर्म होता है ना वो बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉर्म इज नथिंग बट द लेंथ। सो ये तो पढ़ लो पहले। नो लेमा, if S is equals to V1 V2 Vn is an orthonormal set in V, then S is linearly independent। Second, if V belongs to V and V is equals to summation of alpha I Vi, then this alpha I is basically inner product of V and Vi, and this is true for all I। Third, if V belongs to V, then W is equals to belongs to S bar। So that is I want to say W inner product of W and Vi, basically this is 0 for all I goes to 1 to n। Okay, so just read the theorem very carefully।
ये थर्ड स्टेट में जो v है वो सेकंड वाले में v है, सेम है। देखो इधर जो भी स्टेटमेंट है ना, अलग अलग करके स्टेटमेंट है। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक। मतलब उसके साथ सेकंड वाला का जो नोटेशन है उसका कोई लिंक नहीं है। हो गया लोपा? Okay, so tell me the proof of the third lemma. What is W? This is W, right? Now I am using the definition of inner product. Okay, माइनस कॉमन लेके आ जाता हूँ ना, माइनस को बाहर निकाल देता हूँ इनर प्रोडक्ट के डेफिनेशन की हेल्प से। So what is the meaning of this summation? v comma v1 v comma v2 and so on, उसका साथ vi। ओके, सो नाउ उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, हर एक को अलग अलग से ले सकता हूँ ना। v1 by v1 साथ v1। अच्छा, आई नहीं लिख के मैं यहाँ पे जे लिखता हूँ। लेकिन v1 मतलब vi कहाँ पर गया? इसलिए तो मैं जे लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आई है, लेकिन यहाँ पे एक बार वन आएगा, एक बार टू आएगा, एक बार एन आएगा, तो एक टाइम पे इधर भी जे इज इक्वल्स टू आई होगा, राइट? ये लास्ट वाला v ना छूट गया, v कॉमा v बाहर v। हेलो क्या छूटा है? हाँ, क्या छूटा है? हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। वीएन, राइट? सो यहाँ पे ये क्या आएगा? जीरो आएगा ना, सिर्फ आई आई को छोड़कर। अगर हाँ। जे नॉट इक्वल्स टू आई तो जीरो आ जाएगा ना। सो आई विल गेट v कॉमा vi
and inner product of vi comma vi, right? Otherwise all the increases, I mean all the inner product will be zero because the set is ortho normal set, right? Hmm. Now now tell me about this thing. Is it one? Orthogonal. So it means the norm is one. Hmm? Hmm? Tell me. What is the meaning of norm? Root over vi comma vi. So it means the inner product will be one also, right? So this is zero. So what we have seen, v belongs to s bar because w, because w inner product of w and vi is zero, and this is true for all i's, right? Tell me, this is true for all i's, right? So that's why w belongs to s bar. So now can you do the second part? Now I can do it, right? Can I do it? Hmm? So you can easily Hmm. observe this will be only alpha 1. So alpha 1 is v comma v1. Similarly, alpha is equals to v comma vi, right? And this set is linearly independent. Why? Hmm? Tell me why. If I am saying this is 0, now I can operate both side by v1. Okay. So the inner product of this is equals to 0. This is very obvious, na? You know this thing, na? If there is 1 0, then the inner product will be 0, right? And dot product with a vector will be always 0, right? Can you prove it? Yeah, this is your task. Why this is true? Why this is equals to 0? So now basically this is alpha 1 v1 v1. I can write this thing now. Alpha 1 alpha 2 v1 v2 comma v1 alpha n vn comma v1. Basically this will be 0. So all these are equals to 0, right? So then I will get alpha 1 is equals to 0 because this is 1. Fine. Similarly, all the alpha is are 0, right?
टेल मी। लो पास समझ में आ गया ना? सो अगर तुम्हारे पास कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो दिमाग में क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑर्थोनॉर्मल का डेफिनेशन क्या है वो आएगा, ठीक है। सेकेंडली द सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर तुम कोई भी एक वेक्टर को वो ऑर्थोनॉर्मल जो तुम्हारे पास सेट है उसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हो तो तुम्हें तुरंत इस स्केलर के बारे में पता हो जाना चाहिए। वो स्केलर क्या होगा? v के साथ जहां पे v1 है उन दोनों का इनर प्रोडक्ट, ओके। एंड अगर कोई भी वेक्टर को तुम ले रहे हो, ठीक है, v से, तो मैं एक नया वेक्टर तुम्हें दे सकता हूं, वो ये होगा, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास वेक्टर मिलेगा वो भी इस पार पे होगा, मतलब इसके साथ v1 v2 vn हर एक का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? बताओ। नाउ तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मुझे बोलो, क्या क्या पढ़ा अभी तक? तो जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे कुछ हाँ, इनर प्रोडक्ट नहीं, 3 वेरिएंट स्पेस के बाद स्टार्ट करो। 3 वेरिएंट स्पेस के बारे में पढ़ा ना एकदम हाँ से पढ़ा पहले? था। उसके बाद 3 वेरिएंट स्पेस क्या होता है? अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, W को हम 3 वेरिएंट बोलेंगे, अगर T ऑफ W का सबसेट हो जाता है। तो उसके बाद एक अच्छा प्रॉब्लम मैंने कराया था कि कुछ एग्जाम्पल बताओ 3 वेरिएंट स्पेस का, कुछ बता सकते हो क्या सोना? 3 वेरिएंट स्पेस का कुछ एग्जाम्पल्स। रेंज स्पेस नल स्पेस हाँ, रेंज स्पेस, रेंज स्पेस नल स्पेस और कुछ? आइगन स्पेस आइगन स्पेस, ओके। हाँ और वेक्टर स्पेस वी ट्रिवियल स्पेस वेक्टर स्पेस तो हो गया, ठीक है। और ट्रिवियल और कुछ? कुछ क्वेश्चन कराया था, एक अच्छा क्वेश्चन कराया था डायमेंशन 1 को लेके, कोई भी सब हाँ स्पेस हाँ है अगर डायमेंशन उसका वन डायमेंशन 1 है, हाँ, तो क्या हाँ था? कि अगर वन डायमेंशनल स्पेस है तो इफ ओनली इफ इट इज इनवेरिएंट। वन डायमेंशनल स्पेस ऑलवेज इनवेरिएंट होता है। हाँ इफ इट इज आइगन वैल्यू लेम्डा बिलोंग्स टू आर। नो नो, समझ में नहीं आया। कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस पर वन डायमेंशनल स्पेस ऑलवेज इनवेरिएंट स्पेस होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर स्पेस के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नहीं,
ये पूछ रहा कोई भी वेक्टर स्पेस के ऊपर वन डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेस है क्या वो टी इनवेरिएंट हो सकता है? पर लैम्बडा आइगन वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए ना रियल में, मतलब उस फील्ड में। आई एम आस्किंग जस्ट इट कि अगर तुम्हारे पास कोई भी वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो क्या वो टी इनवेरिएंट हो सकता है? आई मीन वेक्टर सबस्पेस हो सकता है, टी इनवेरिएंट सबस्पेस। हाँ, वन डायमेंशनल तो होता है। क्यों? क्योंकि उसको सी वी फॉर्म में लिखेंगे और क्यों क्यों क्यों? बताओ क्यों? एक मिनट रुको। लोपा तुम बताओ। सोच रही थी अभी तक। शायद ऐसा नहीं होगा, डायमेंशन 1 वाला टीम वेरिएंट नहीं होता है ना। ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि 10 को R2 के ऊपर अगर मैं 10 कर रहा हूँ तो 10 को मैं 01 पे भेज सकता हूँ ना, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर डब्ल्यू टी इनवेरिएंट हो गया तो इसका मतलब टी के पास जरूर एक आइगन वैल्यू होगा। ठीक है, तो बस मैं ये बोलना चाहता था। उसके बाद एनहिलेटर ऑफ किसी एक सेट अगर तुम्हारे पास है तो उसके एनहिलेटर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहिलेटर? टेल मी। Rupa, what is the meaning of annihilator? It's not equals to such. So उसके पहले हम लोगों को डुअल स्पेस के बारे में जानना पड़ेगा, राइट? डुअल स्पेस का ही एक सब स्पेस होता है एनहिलेटर, राइट? ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने इनर प्रोडक्ट पढ़ा और इनर प्रोडक्ट के बाद हम लोगों ने डब्ल्यू पार्ट
के बारे में हम लोगों ने उसके बाद फंक्शन पढ़ा, राइट? वो फंक्शन डुअल स्पेस। हाँ, हाँ, क्या मतलब क्या जो बोल रहे हो? फंक्शन ले रही है ना, लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा मतलब आवाज ही नहीं एक पहुंच रहा है, तो को मैं कैसे समझ? हेलो हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, बेसिकली वो जो फंक्शन वो डुअल डुअल स्पेस, हेलो, स्पेस का होता है, मतलब ए बिलोंग्स टू बी दैट इज इक्वल्स टू जीरो, है ना? सो मुझे आवाज पहुंच नहीं रहा है, तो अभी मैं सुन नहीं रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट दिन हम लोग जो पढ़ेंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस पढ़ेंगे, और उसके साथ, अच्छा ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस उसके साथ ग्राम स्मिथ पढ़ाना है मुझे। ग्राम स्मिथ बोलने में मुझे कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ग्राम स्मिथ में, लेकिन उसका लेके ठीक है, चलो मैं हो बोल ही देता जाएगा हूँ। ग्राम स्कूल। हेलो। हाँ बोलो। वो डब्लू पार्ट क्या बोलते हो? डब्लू कॉम्प्लीमेंट को डब्लू पार्ट ऐसे बोलते हो? डब्लू पार बोलता हूँ, ठीक है। डब्लू पार मीन्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्लू। अच्छा अच्छा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में भी दिया था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ओके, रीड इट। सो I am writing orthonormal, right? If, if a basis is itself a orthonormal set, then I will say the basis is orthonormal basis. Okay, so theorem Graham Smith orthogonalization process. यही स्पेलिंग है ना? पता नहीं, मैं भूल एक बार देख गई के हूँ। बताओ। What is this theorem? Okay, the basis of V. Now I am trying to modify beta naught. Now E1 is equals to V1 by norm V1. Okay, so basically this is a vector whose norm is 1. Now I am writing, by the help of this vector, I am writing W2 like this.
So you can easily observe this inner product will be 0. Okay, now I am defining E2. Okay, what is E2? This is my E1. E2 is W2 by norm of W2. So now by the help of E2, I can define W3. Basically, W3 is V3 E1 minus V3 E2. Okay, this is W3. So you can easily observe the inner product of W3 with E1, this is 0, and inner product of W3 with E2, this is also 0. Okay, so similarly we can define En, which will be Wn by norm of Wn. Okay, and what is Wn? Vn minus Vn E1 okay, fine. So this beta is an orthonormal set, and beta is an orthonormal basis. फाइन, क्या समझ में आ गया है? प्रोसीजर समझ में आया है? ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो ऊपर वाला हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था, सॉरी, ये जो थ्योरम पढ़ा था उसका एप्लीकेशन मैंने इधर किया है ना. देखो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होगा. सो अभी मेरे पास E1 आ गया है, ठीक है, एंड E2, इसको मुझे W2 आ गया है ना, जो E1 के साथ ऑर्थोनॉर्मल होता है, राइट. सो अगर सॉरी ऑर्थोगोनल होता है, अगर E2 को मुझे ऑर्थोनॉर्मल बनाना है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट, अगर सॉरी उसका अगर नॉर्म को 1 बनाना है, तो उसके लिए मैंने डिवाइड कर दिया. E2 के हेल्प से मुझे W3 बनाना है, जो E1 एंड E2 के साथ ऑर्थोनॉर्मल होगा. तो इसलिए मैंने वेक्टर को कुछ इस टाइप से डिफाइन किया, ठीक है. So you can easily observe this will be orthonormal with this. So हम लोगों को इसके बाद E3 मिल जाएगा, राइट. What is E3? W3 by norm W3, ये हमारा E3 होगा. उसके बाद E4, ऐसे करते करते हम लोग En डिफाइन करेंगे. सो ये जो मेरा बीटा होगा वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा, राइट. और कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट के पास अगर n वेक्टर होता है, यहाँ पे बीटा नॉट के पास भी n वेक्टर है, बीटा नॉट बेसिस है, और मुझे पता है कि ये जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो ऑलरेडी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन के साथ इक्वल है. So then I can say this will be a basis of the vector space V. Okay, समझ में आया सब लोगों को? बताओ, रूपा समझ में आ गया ना? सोना समझ में आ गया? सो नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करके आगे बढ़ेंगे. तो
इसलिए मैं इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ अभी। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है। आज के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय। और इसको स्क्रीन